Hello, friends. Welcome to Daily PT Pointers, in which we will discuss the important headlines of the day for October 31st. Our first topic is related to सरदार पटेल. ये टॉपिक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और GS1 हिस्ट्री सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. Our Prime Minister has paid tribute to सरदार पटेल on his जयंती. हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. He was born on 31st October 1875 in Gujarat and went on to become one of the foremost pillars of the national struggle for freedom. Every year, the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel is observed as Rashtriya Ekta Divas or National Unity Day. It was first celebrated in 2014. हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेरी माटी मेरा देश कैंपेन और मेरा युवा भारत से रिलेटेड है. ये टॉपिक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम मार्किंग द कल्मिनेशन ऑफ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन्स अमृत कलश यात्रा एट कर्तव्य पाथ. नाउ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन है क्या? सो इट इज अ ट्रिब्यूट to the Veers and Virangnas who have made the supreme sacrifice for the country. The campaign was envisaged as a culminating event of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and Prime Minister will also launch an autonomous body called Mera Yuva Bharat for the youth of the country. The platform is in line with the Prime Minister's vision to provide equitable opportunities to every youth of the country. And youth in the age group of 15 to 29 years can avail the benefit of the platform. हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्लड प्रोन एरियाज से रिलेटेड है. ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और GS3 अर्बन डेवलपमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. नाउ अकॉर्डिंग टू अ स्टडी led by the World Bank and published in Nature, flood risk in many cities is rising because they are expanding into flood prone areas. वहीं अगर इंडिया के अर्बन एरियाज की बात करें तो it have been flooding more and more often, destroying lives and livelihoods, and the risks are disproportionately higher for those living in informal structures. There has been a rise in ecotourism, resorts on forest lands, and the construction of large structures including government buildings and even religious structures on reverse floodplains. हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड है. ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज. इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं. इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. वहीं अगर इसके ओरिजिन की बात करें सो द ओरिजिन ऑफ दिस डायरेक्टरेट गोज बैक टू 1 May 1956 व्हेन एन एनफोर्समेंट यूनिट was formed in the Department of Economic Affairs for handling exchange control laws violation under Foreign Exchange Regulation Act 1947. In 1957, this unit was renamed as Enforcement Directorate. वहीं 1960 में the administrative control of the directorate was transferred from the Department of Economic Affairs to the Department of Revenue. हमारा नेक्स्ट टॉपिक कार्बन फ्लावर्स से रिलेटेड है. ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रेलिवेंट है. नाउ रिसर्चर्स एट IIT बॉम्बे हैव सिंथेसाइज्ड पार्टिकल्स दैट absorb 3 frequency of sunlight and convert it to heat with an efficiency of more than 80%. It absorbs 3 frequencies in sunlight, infrared, visible light and ultraviolet. हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेपाल के स्नो कैप्ड माउंटेन से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और GS3 इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. द नेपाल स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैव लॉस्ट close to 1/3 of their ice in over 30 years due to global warming. And the climate scientists say the Earth's temperature has increased by an average of 0.74 degrees Celsius over the past 100 years. But warming across South Asia's Himalaya have been greater than the global average. The glaciers in Nepal, west between two major carbon polluters, that is the India and China, melted 65% faster in the last decade than in the previous one. And the glaciers in the Hindu Kush Himalaya could lose up to 75% of their volume by centuries end due to global warming and can cause dangerous flooding and water shortages for 240 million people who live in the mountainous region. आज का हमारा लास्ट टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है. ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और GS2 पॉलिटी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है. A 5-judge bench of the Supreme Court led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud is expected to hear a batch of petitions challenging the constitutional validity of the electoral bond scheme. So electoral bonds हैं क्या? It was first announced during the Union Budget session in 2017. Electoral bonds are interest-free bearer instruments, which means that they are payable to the bearer on demand, similar to a promissory note. Electoral bonds are sold in denomination ranging rupees 1,000 to rupees 1 crore. These bonds can be brought from authorized State Bank of India branches through accounts complying with KYC norms, and following this,
The political parties can choose to encash the bonds within 15 days of receiving them and fund their electoral expenses. The rationale behind introducing the electoral bond scheme was to cleanse the system of political funding in the country and bring about transparency in electoral funding in India. So friends, ये आज के हमारे important headlines of the day थे. For more updates on current affairs, you can follow us on our social media platforms. Thank you.